and share the screen. I think कल हमने किया था ये कि if you have a surface and you've got at a certain point P patch of a surface, and मैं बार-बार इसको emphasize कर रहा हूँ, surface का छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि we want to study this surface locally, तो हम इसका एक patch लेते हैं in our three-dimensional space, and of course this is mapping from some open set inside my UV plane, यानी मेरे जो variables हैं U and V. Let me call this my UV plane. यहाँ पे मैंने कोई open set लिया है, which has been mapped via this smooth map onto this patch of the surface. यानी यहाँ पे कोई UV है, pair of numbers, which has been mapped to some point R at UV. ये plane है, ये मैं plane draw कर रहा हूँ. You can imagine. ये है ना, ये भी एक plane है. I hope it is coming out. Yeah, दो डायमेंशंस में मैं थर्ड डायमेंशंस का दिखाना चाहता है ना, मतलब तीसरी डायमेंशन को हम फिर थोड़ा स्लांट करते हैं. ओके, एनीवे, तो फिर अगर यहाँ पे दो कर्व्स इंटरसेक्ट करती, ठीक है, so they would correspond to some, of course, in this direction some change in parameters. तो मैंने उनको, of course, ये पॉइंट कहीं इस पॉइंट के आसपास होगा जो पहले था, और ये पॉइंट भी कहीं दूसरा पॉइंट जो इधर है, इसकी प्री इमेज होगी इस ओपन सेट में कहीं इधर. तो उसको हमने कहा, मान लो एक पॉइंट अगर पहले UV था, दूसरे का मान लो इंक्रीमेंट चेंज हुआ, तो दिस U du V plus dV, और तीसरे का मान लो U plus some change in U V plus del V, मतलब ये तीन पॉइंट्स हैं. तो फिर हमने कहा कि ये जो एंगल बिटवीन देम होगा, इट विल बी एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स which are given by, जिनको हमने नाम दिया था dr and del r, these tangential vectors at that direction. And then we showed that then it size the angle between these intersecting curves. Cos of psi should be, in terms of fundamental magnitudes, I can write it here, E du del u plus f times du del v plus dv del u plus g times dv del v divided by the length of these tiny segments there, जिसको हम कह सकते हैं ds del s. ओके, तो इसी तरह से हम sin of psi ले सकते हैं. Sin of psi would be, of course, the cross product divided by the lengths. So that would be dr del r. Again, we just substitute the values. Substitute the values means now dr is given by, it's a differential of r, so it will be some du ru plus dv rv, and this del r, the vector del r, will be some del u, so ru plus del v r. और अगर हम इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो you would see that you will get modulus of du del v minus del u dv into norm of ru cross rv, which is h divided by ds del s. So that will be sin of psi. If you have curves intersecting at an angle psi, then this is the expression for the cos and sine of that angle in terms of the first and second order fundamental magnitude. Of course, this is h. As you can see, this is h. इसको मैं h से replace कर सकते हैं. मैं इसको लिख सकता हूँ du del v minus del u dv multiplied by h whole divided by ds del s. Of course, tan होगा तो फिर तो वो भी निकाल सकते हो. Tan is just sin of psi cos of psi, and you can find that. Now the condition for orthogonality. Now the condition for orthogonality होगी, यानी अगर मेरे पास दो
कर्व्स हैं सरफेस पे, अगर वो ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, यानी साई पाई बाय 2 है, यानी उनके दरमियान जो टेंजेंट्स उस पॉइंट पे पड़ेंगे उन दो कर्व्स के, उनके दरमियान अगर एंगल है पाई बाय 2, so that's what we mean by angle between the curves. It is angle between the tangents to those curves at the point of intersection. Now the condition for orthogonality क्या होगी? Orthogonality of two curves will be cos of psi equal to 0. That is, in terms of first order fundamental magnitudes, E du del u plus f times du del v plus dv del u plus g times dv del v equal to 0. So this is what we are going to use, this condition for orthogonality. Okay. And then there are particular cases. Particular cases ये होंगे कि अगर हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व्स हैं, particular case क्या होगा? Now suppose angle between the direction, because this increment change represents direction, जो मैंने इससे पहले भी कहा था, and parametric curve in a U curve, parametric curve v equal to constant. अगर v equal to constant है तो du 0 होगा. Now in this case dv is equal to 0, right? Okay, तो change in v नहीं, let me call it, हाँ du को ऐसे ही रखते हैं, so हमारा del v 0 कर देते हैं, right? हम मानते हैं वो पैरामीट्रिक कर्व्स के जो इंक्रीमेंटल चेंज है वो रिप्रेजेंट होती है बाय du del v से. मतलब ये हमारी मर्जी है, वैसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. So अगर del v को, in that case del v is equal to 0, and then this del r would be equal to just ru del u, और ये जो अपना del s है वो होगा बराबर length of this del r, that would be of course इसकी length ले लो, it would be ru into del u, के बराबर होगा nothing but root of e into del u, and cos of psi फिर बन जाएगा, फॉर्मूला में चेंज आ जाएगी, इसमें सब्स्टिट्यूट करो del v को 0, so that would be e du del u plus f dv del u, क्योंकि dv del v 0 है, g वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा और f वाली एक टर्म भी खत्म हो जाएगी. You would have नीचे आएगा रूट e into del u और अपना ds, ये del s की जगह रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 by root e, we prefer to write it like this, into e du by ds plus f du by ds. हमने ब्रेक किया, del u कैंसिल हो जाएगा दोनों में, and of course sin of psi would be, वो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, del v equal to 0, h by root e into dv by ds. And in case u is equal to constant and angle between the direction du dv and the parametric curve and a v curve, parametric curve u is equal to constant, which is the v curve. And in that case क्या होगा? So del u should be 0 and del r will be just r sub p del v, and del s जो होगा अपना, that is just norm of rv into del v, or of course again cos of psi, इसमें del v को पुट करो 0, वो बन जाएगा f du del u plus f
मैं क्या लिखा, तो जी आना चाहिए। क्या था वो अपना फॉर्मूला, उसमें डेल यू को पुट करना है 0, है ना। तो यू को मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, तो मेरे पास क्या था फॉर्मूला, cos of psi was, फिर से लिखते हैं, cos of psi was basically e du del u plus f del u dv plus dv del u plus g del v dv। उस हिसाब से ये होना चाहिए यहाँ पे that is 0, so ये टर्म गई और ये टर्म गई, so it should be f times del u ही 0 है, so it should be f times क्या किया यहाँ पे, it should be du del v, so it should be f times du del v plus g times del v, simply substitute करना है और कुछ नहीं, divided by of course अपना तो ds है और आएगा ahead यहाँ पे, हाँ this is actually root g into del v, क्योंकि g जो होता है वो होता है rv dot which is equal to rv dot square, तो इसका रूट जो होगा मॉडुलस ऑफ rv। Anyway, तो यहाँ आना चाहिए हमें फिर g into del v, which can be written as cos 1 by root g square root of g into f times ये खत्म, so it should be du by ds plus g times du by ds। Similarly, by the same making the same substitution, sine of psi should be h by root g into du by ds modulus। तो ये तुम्हें सब्स्टिट्यूशंस करने हैं, कुछ उससे ज्यादा है frankly speaking। अब ये जो हमने किया, ये हमने एक इम्पोर्टेंट थ्योरम के लिए किया जो हम करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम ये कहता है कि हमारी जो रेगुलर सरफेस है, अगर कोई सरफेस हमारी रेगुलर है, यानी हर कोई पॉइंट उसका रेगुलर है, तो उसमें पैरामीट्रिक कर्व्स होंगी, मतलब एक सेट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व इस तरह से होगी, दूसरी सेट ऑफ पैरामीट्रिक कर्व्स कुछ दूसरी तरह से होगी, मतलब देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज। नाउ वी नो दैट वी कैन रीपैरामीटराइज द सरफेस, हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी पैरामीट्रिक कर्व्स को, क्योंकि पैरामीट्रिक कर्व्स डिपेंड ऑन आवर चॉइस ऑफ पैरामीटराइजेशन। नाम ही है ना पैरामीट्रिक कर्व कि हम u को कांस्टेंट कब रखें और v को कांस्टेंट कब रखें, फिर जो कर्व बनेगी when we let the other variable change surface पे, वो हमारी पैरामीट्रिक कर्व्स है। तो हम ये प्रूव करने वाले हैं कि फॉर अ रेगुलर सरफेस हम इसको इस तरह से रीपैरामीटराइज कर सकते हैं। सरफेस सेम है कि रीपैरामीटराइजेशन के बाद जो इसकी पैरामीट्रिक कर्व्स है वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होगी हर चीज के लिए, मतलब जैसे प्लेन में है ना, जो हमारी पैरामीट्रिक कर्व्स है एक्स वाई पर जो ना यूजुअल पैरामीटराइजेशन ऑफ सरफेस है, तो ये जो है ये हर पॉइंट पे एक दूसरे को 90 एंगल्स पे काटती है। इसका जो ढांचा है प्लेन का, हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कोई भी आर्बिट्ररी सरफेस हो, लोकली हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि हम उसको इस तरह से रीपैरामीटराइज करें, उसके पैरामीटर्स को ऐसे चूज करें कि वो जो टेंजेंट्स बिटवीन द कर्व्स ऑन द सरफेस, पैरामीट्रिक कर्व्स ऑन द सरफेस हो, वो हर जगह पे 90 हो। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। अब उसके लिए पहले हम सोचेंगे कि जैसे हाउ डू वी हैव सॉर्ट ऑफ, अगर मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, जैसे फैमिली ऑफ कर्व्स में सिंपल सी एग्जांपल लूंगा, से y इज इक्वल टू, इन अ प्लेन में ले रहा हूँ x स्क्वायर प्लस c। कर्व्स नीड नॉट बी इन अ प्लेन, है, यू कैन हैव स्पेस कर्व्स, तो प्लेन पे दिखाना आसान है। अब c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये एक फैमिली ऑफ पैराबोलाज है इन द प्लेन। मैं कह रहा हूँ प्लेन में कर्व ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ। सो एक तो होगी, अगर मैं c को 0 पुट करूं तो कुछ ऐसा आएगा, राइट।
c को 1 पुट करूंगा तो कोई ऐसा पैराबोला आएगा, 2 करूं इसी तरह से c को अगर -1 करूं -2 करूं, राइट? तो एक्चुअली 0.1 0.2 मैं कुछ भी होता, इट इज जस्ट अ पैक्ड फैमिली ऑफ कर्व्स एज यू कैन सी। जिस तरह से ये बिल्कुल एक पैक्ड फैमिली ऑफ कर्व्स है ना, जब मैं u को कांस्टेंट या v को कांस्टेंट कर रहा हूं, so this family of curves is represented by this equation. But this family of curves is also represented by a differential equation, that is dy by dx is equal to 2x. इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, है ना? क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये है, तो मैं कहूंगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये सेट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स है। और टू बी मोर प्रिसाइज मैं कहूंगा dy minus 2x dx equal to 0, इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, दिस इट रिप्रेजेंट्स दिस फैमिली ऑफ पैराबोलास, राइट? ठीक है ना? और मैं बात करूंगा टोटल डिफरेंशियल की। तो अगर मैं लूं, देखो मुझे लेना है, मैं ऐसे कर सकता हूं, इसी को मैं कहूंगा इट इज लाइक टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सम फाई। टोटल डिफरेंशियल पता है ना? टोटल डिफरेंशियल होता है डी फाई इज इक्वल टू del phi by del u into du, मतलब जो भी अपना x ले लो वेरिएबल्स, अगर तुम्हारे पास फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स है, तो अभी जो मैंने कहा कि आई हैव गॉट अ फैमिली ऑफ पैराबोलास दैट इज रिप्रेजेंटेड by a certain differential equation. ये ठीक से बना नहीं रहा हूँ मैं, but you understand कि dy minus 2x dx equal to 0, ये जो differential equation है ये इस फैमिली को रिप्रेजेंट करती है। I could have sort of, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ as a differential of a function of 2 variables, and you must remember कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि total differential of a function बराबर होता है if you have a function of 2 variables, so total differential इसका जो होता है del phi, तो जो भी मान लो phi is a function of x and y या u and v, जो भी तुम नाम दो, so total differential इसका ये इसके बराबर होता है dx plus del phi by del y into dy। तो मैं इसको ऐसे सोच सकता हूँ, दिस इज एक्चुअली minus 2x dx plus dy equal to 0। अब अगर मैं लूं phi of x y, मुझे ऐसी फंक्शन चाहिए कि जब मैं उसको x के साथ डिफरेंशिएट करूं, मुझे मतलब y के साथ डिफरेंशिएट करूं पार्शियली, तो 1 मिले, यानी y होना चाहिए। और इसको मैं कर सकता हूँ जब x के साथ करूं तो इट शुड बी y minus x square। अगर मैंने कोई फंक्शन, इस फंक्शन को, what is del phi by del y, that's equal to 1। what is del phi by del x, that's equal to minus 2x। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको लेता हूँ, मतलब I can think of this as del phi by del x dx plus del phi by del y dy is equal to 0, where phi of x y is given by y minus x square। ठीक है ना? ये ज्यादा अच्छा तरीका है क्योंकि इससे पता चलता है कि इसका एक जो पर्टिकुलर सोल्यूशन ये है, दिस पुट इक्वल टू 0। ओके, तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका नाम है टोटल डिफरेंशियल। सो del d phi equal to 0। So if you have a function of 2 variables, say f of phi equal to 0, right, which represents, then this differential of that would represent a family of curves. If I put the differential of that in general, I'm saying differential of that equal to 0, I will get a family of curves in R3। So that's, मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दी, मैंने बोला R3 में थोड़ा सा इसको दिखाना, थोड़ा सा मल्टीवेरिएट कैलकुलस में जाना पड़ेगा, लेकिन हम उसको रहने देते हैं क्योंकि इस एग्जांपल से आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर। So now what I'm trying to say, a family of curves can be given by this differential of this equal to 0, which is the same thing as this, while phi is some differentiable function
हाँ, एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि ये दोनों इकट्ठे जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो फिर फैमिली ऑफ कर्व्स नहीं बनेगी। मेरे कहने का मतलब है, मान लो 5xy is equal to minus x square, या मतलब then it would be just a constant। यानी अगर ये दोनों एक साथ जीरो हुए, यानी del 5 by del x भी जीरो है और del 5 by del y भी जीरो है, तो वो किसी फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिकॉज देन इट वुड बी a constant in टू स्पेस, राइट। सो उस केस को हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। और फर्दर मोर उसको फर्दर हम स्टडी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सपोज यहाँ भी ये जीरो है, यहाँ भी ये जीरो है, दैट वुड मीन dy by dx जो है वो जीरो पे जीरो है, which means it is indeterminate, we cannot study it further with the help of डिफरेंशियल इक्वेशंस। अगर ना ये दोनों एक साथ, मतलब हो सकता है किसी पॉइंट पे ये जीरो हो, किसी पॉइंट पे ये जीरो, लेकिन दे कैन नॉट बी जीरो एट द सेम वैल्यू ऑफ x या सेम वैल्यू ऑफ xy, ठीक है। सो इसको हम यहाँ तो हम पहले ये मतलब एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि दिस डज रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स, differential of a function of two variables such that this phi should be differentiable, है ना, तभी तो मैं इसको partially differentiate करूँ। यानी ये phi differentiable हो और del phi by del x and del phi by del y should not be simultaneously zero, then this would represent a family of curves. And let me write down it as a definition. Differential equation of family of curves, of the family of curves. लिखते हैं family of curves. Let's call it in R3. Okay. Now suppose अब मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, मैंने यहाँ जीरो क्यों किया, मतलब दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वैल्यू, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इसका मतलब ये भी है, इसका मतलब ये भी तो है ना, जब मैं कह रहा हूँ किसी का डिफरेंशियल जीरो है, दैट मींस phi of uv is equal to some constant. It's another way of saying the same. Phi of xy is some constant. So phi of xy equal to some constant, which in this case is a function of two variables, if that is equal to constant. In this case, let's call it zero. यहाँ पे zero था. So then उसका जो differential है, that would represent a family of curves. In this case zero था, लेकिन अगर ये constant भी होता तब भी एक ही बात होती, क्योंकि जब उसका differential करते तो zero मिलता. Zero का तो खैर zero मिलेगा. So that's what I'm going to write. मैं ज़्यादा general लिखूँगा. I will take that to be a fixed number. Okay. Suppose phi of uv equal to c, let's call it 1, is the equation of a family of curves differentiating, then taking the differentiating, we get the differential of phi is equal to 0, that is phi sub u, wait, phi sub u or del u, du plus phi sub v dv is equal to 0, or p du plus q dv is equal to 0, where p is equal to phi u, p is equal to phi u and q is equal to phi sub v are functions of class 1. तो ये important है, मतलब class का मतलब have continuous partial derivatives. ये जरूरी है ताकि हम इसको वापस रिवर्स में कर सकें. And of course जो मैंने बोला, and p and q do not vanish together and do not vanish together.
So I can say ये जो P मतलब ये जो अपनी second है, so ये जो हमने लिखे ना ये conditions, so under these conditions three in a differential equation 3 represents the family that the family of curves 1. Okay, now we want to come to the theorem. उससे पहले हम बात करेंगे orthogonal trajectories की. And another definition, orthogonal trajectories. Orthogonal trajectory for any you can have any family of curves for any, let's call it given family of curves. On a surface, there always exists a second family of curves. There always exists a second family of curves such that they called the orthogonal trajectories of the given family, orthogonal trajectories of the given family with the property that at every point a member of second family intersects the member of the given family orthogonally at 90 degrees. Orthogonally, at right angles. यानी मतलब कोई भी फैमिली ऑफ कर्व्स आप लो, ये मैंने ऐसे ली, तो दुनिया में एक फैमिली ऑफ कर्व्स हमेशा एग्जिस्ट करेगी सच दैट कि वो इस पहली फैमिली को इंटरसेक्ट करेगी इस तरह के, ये मैंने ठीक से नहीं बनाया यहाँ पे, कि उन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे दोनों का जो टेंजेंट्स का एंगल होगा वो π/2 होगा. मैंने थोड़ा जल्दी में बनाया, लेकिन यहाँ पे ठीक से नहीं बना, लेकिन इट ऑलवेज मस्ट बी ट्रू बिकॉज ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हमें ऐसा इंश्योर करना है कि अगर a का dy/dx है, मतलब कोई कर्व पहले वाली या f मान लो, तो we just have to ensure that f dash x into g dash x प्लेन पे ये कर्व्स है is equal to -1. Under this condition, they would intersect orthogonally. ये दोनों का जो स्लोप का जो tangent का जो slope होगा वो होगा mutually orthogonal under this condition. So this is always true. That we can always find another family with this property. Now, theorem ये है जो हमें करना है basically वो ये. For a surface, parameters can always be chosen in such a way, and we can reparameterize it. Parameters can always be chosen so that the curves of a given family and their orthogonal trajectories
become the parametric curves. मेरे कहने का मतलब है हम ऐसा कह रहे हैं कि अब आप कोई सरफेस लो, इसकी अपनी कोई parameterization होगी या जो भी है, we can always choose a given family of curves or then and its orthogonal trajectories, यानी curves which are orthogonal to this set of family of curves such that they become parametric curves. यानी ये हमारे parametric curves बनेंगे, यानी ये वही curves होंगी under which जो generate होती है when we fix one parameter and let the other vary. ये दिखाने वाले हैं, तो यानी हमें वो एक्चुअली वो मैप दिखाना होगा रिपैरामीटराइजेशन का एग्जिस्ट करेगा. So let's do the proof. Let R is equal to R at UV be the given surface. Let's call this one be the equation of the surface. And let phi at UV equal to some constant. Let's call it second. Be the equation of the given family of a given family of curves. Now from second, जो कि मैंने इससे पहले किया था, we have, हम इसको differentiate करेंगे, I get some phi u du plus phi v dv is equal to 0, which is equivalent to p du plus q dv is equal to 0, where I can more generally take my p to be some lambda times phi sub u and q to be lambda times phi v. क्योंकि lambda से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे, but lambda is non-zero, and of course p and q do not vanish together. Now that would give me, अगर मैं इसको थोड़ा सा manipulate करूँ, we get du by dv is equal to minus phi v by phi u, that's equal to minus q by p, and हमें पता है कि q and p do not vanish together, वो हमें दिमाग में रखना है. Or I can write the same thing as du by minus q is equal to dv by p. तो इसका मतलब ये जो p and q numbers हैं, they must be proportional to du and dv. And minus q and p are numbers that are proportional to du and dv, and the जो ratio है वो fixed है. So therefore I can say, therefore the pair of numbers, the minus q minus p, are the direction ratios of the tangent at any point uv of the members of the family second. जो हमने जो curves की family बनाई, तो इतना हमें पता है कि इसके डायरेक्शन रेशियोज फिर ये होंगे, वायर p और q की ये वैल्यू है, और दे डू नॉट वैनिश टुगेदर, ये दिमाग में रखना. अब सपोज अब हमें इसकी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज हमें पता करनी होगी. नाउ लेट द डायरेक्शन रेशियोज, यानी numbers proportional to changes in u and v, let the direction ratios of the tangents at this point uv, which is some point, of the members of some member of the orthogonal trajectories. और क्योंकि इसकी एक orthogonal trajectories होगी, यानी that curve, that set of family जो usually orthogonal है to the given family of curves.
of two, मान लो उसकी डायरेक्शन ratios है, be denoted by what? Let's call it del u del v. इसका तो पहले ही हमने du dv राव रखा, इसके डायरेक्शन रेशियोज ये भी है और ये भी है, you know, because डायरेक्शन रेशियोज क्या है? They are proportional numbers. du and dv are proportional to qp. It means that the converse is also true. Okay, तो अगर ऐसा है, now so the directions are orthogonal. So the directions on del u del v and du dv are orthogonal. और हमने उसके लिए सरफेस पे अगर ऐसा होगा किसी पॉइंट पे, so उसके लिए कंडीशन है, वो क्या है? It implies that e du del u plus f du del v plus dv del u plus g times dv del v is equal to 0. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? इसकी जगह आएगा डी की जगह माइनस क्यू, क्योंकि इट इज सम स्केलर टाइम्स, तो राइट हैंड साइड 0 है, तो सम स्केलर टाइम्स क्या बोलते हैं डी यू, सो उसकी जगह ये आ जाएगा. मैं बेसिकली मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. मैं what I'm trying to say is this: I've got du by minus q is equal to dv by p is equal to say some number, थोड़ी देर के लिए अल्फा मान लो. इसका मतलब du जो होगा वो होगा अल्फा टाइम्स माइनस क्यू, और जो dv होगा वो होगा अल्फा टाइम्स p. जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वो अल्फा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है, वेयर अल्फा इज नॉन जीरो, क्योंकि दोनों एक साथ वैनिश नहीं कर सकते. ओके, सो यू हैव गॉट नाउ minus q times del u plus f times, फिर से वहीं पे del u की जगह मैं लिख सकता हूँ minus q del v, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ p dv की जगह p, राइट, del u plus g, अगेन del की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, p into del v is equal to 0. और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, it would be fp minus eq times del u plus gp minus fq times del v is equal to 0. Let's call this equation third. Now this is essentially the differential equation of the orthogonal trajectories, क्योंकि हमने orthogonality की कंडीशन की. अब ये differential equation है. मैंने बोला ना du और del v में कोई फर्क नहीं, क्योंकि हमें दो चाहिए थे, इसलिए मैंने इसका नाम del u del v रखा. So it is something into small change in u, some number into small change in v is equal to 0, which always represents a family of curves, provided these ये जो यहाँ quantity है यहाँ और यहाँ, they have got continuous partial derivatives and they do not vanish together. तो वो हम हमेशा दिखा सकते हैं कि पहले तो इसके continuous partial derivatives होंगे. why? क्योंकि p के हैं, q के हैं, है ना, by definition, क्योंकि p and q are the same numbers associated with the given family of curves. क्योंकि वो ऑलरेडी एक फैमिली ऑफ कर्व्स की डिफरेंशियल इक्वेशन से आए हैं, तो उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हों. और g and f है क्या? g and f are essentially the partial derivatives of ru, है ना, ru dot ru. अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो you will get second order partial derivatives. और मैंने कहा था सरफेस में it should be of class second, at least इसके second order partial derivatives continuous होने चाहिए. तो ये जो g and f है, इसके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे वो होंगे सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ r, so they are continuous. तो पहली चीज तो ये कि दोनों कंटिन्यूअस हैं और दोनों इकट्ठे वैनिश भी नहीं हो सकते, राइट? वो कैसे? सपोज fp माइनस eq 0 है और साथ में gp माइनस fq भी क्या हो रहा है, fq भी 0 है.
तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा, मतलब उसका मतलब पी एंड क्यू दोनों इकट्ठे 0 होने चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एफ क्या लिख क्यों रहा है, क्योंकि सपोज ये 0 है तो आई वुड गेट एफ पी, ये लिख नहीं रहा है मेरा आज, ई क्यू अगर 0 है और दूसरे साइड से तुम्हें तो सब्स्टिट्यूट करना है दोनों में से एक में, तो यू विल गेट बोथ पी एंड क्यू मस्ट बी 0. So GP minus FQ या FP minus GQ is equal to 0 would mean what? FP is equal to EQ. Okay, साथ में GP minus FQ भी 0 है, नहीं मैंने लिखा? Okay, तो ये अगर 0 हुए, P और Q बराबर नहीं है, मतलब P और Q दोनों 0 नहीं है, तो अगर ये बराबर हुए तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ. They cannot be 0, both cannot be 0 together, P and Q. तो मैं इसको यहाँ, मतलब we will get, let me write it like this. P by Q अगर मैं लूँ यहाँ दोनों साइड से, ऐसे मैं करता हूँ, अगर दोनों में से चूंकि कोई 0 नहीं है तो यहाँ से मुझे मिलेगा P by Q. P by Q किसके बराबर आएगा? E by F. तो वो बराबर आएगा यहाँ से I think G by F, right? तो what does that mean? इसका मतलब अगर ये दोनों 0 हुए तो इस तरह से होना चाहिए, which would give me, अगर ये दोनों, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर, तो उसका मतलब P by Q इसमें से मुझे मिलेगा E by F और दूसरे में से मुझे मिलेगा F by G, सॉरी, यानी E by F should be equal to, लिख नहीं रहा है, E by F मुझे मिलना चाहिए बराबर F by G के, यानी EG minus F square must be equal to 0, which means that ये बराबर है RU cross RV के, जो 0 होगा यानी पॉइंट रेगुलर नहीं होगा, अगर पॉइंट रेगुलर नहीं है तो ये 0 नहीं हो सकता, which means ये इसके बराबर नहीं हो सकता, which means ये दोनों बराबर नहीं, 0 नहीं हो सकते एक साथ. Anyway, तो इसका मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि it does indeed represent a family of curves. Furthermore, orthogonality की conditions का मतलब ये है कि जो हमारी original family of curves है उसके साथ ही orthogonal है. Okay, which is the required, अब मैं इसीलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, which is the required differential equation of the orthogonal trajectories of the given family. Orthogonal trajectories of the given family. ठीक है, रीजन मैं बताऊंगा why. मैंने अभी कहा था, since EG minus F square is always positive and P and Q do not vanish together. Okay. Okay, so we get this. Now let the solution of this thing, let the solution, अब ये differential equation है तो इसका एक solution होगा और वो क्या होगा? Family of curves. Let that solution of 3 be some f of uv equal to some constant k. हमें पता है अगर ये इस तरह की condition है तो it is associated with a family of curves. So this is now my orthogonal trajectories of family of curves. उसकी equation मान लो ये है, ठीक है. So इसके बाद मुझे दिखाना ये है बेसिकली ना वो रीपैरामीटराइजेशन का. नाउ डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो मैं इस f और उसका कनेक्शन जो होगा वो वाज़ेह कर सकते हैं. इजी है वैसे. डिफरेंशिएटिंग 4
the differential equation of the orthogonal trajectories becomes the orthogonal trajectories of 2 becomes, as usual, it will be fu f sub u del u plus f sub v del v, del v is equal to 0. And अगर मैं और चूंकि 3 और 5 ये जो इक्वेशन, अब ये भी है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द, ये भी है ना, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, तो इसका ये इस टाइप की होनी चाहिए ना, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ फैमिली ऑफ कर्व्स, इट शुड बी सम फंक्शन fu जिसका पार्शियल डेरिवेटिव पहला नंबर है, राइट? तो which means that, so therefore, and which is the same as, which should be the same as 3, which represents the same family as 3. So therefore मैं कह रहा हूँ fp जो numbers है वहाँ पे minus eq should be equal to some mu times, they should be proportional, f sub u and gp minus fq must be equal to some mu times f sub, तभी ये दोनों same होनी चाहिए, where mu would depend upon u and v, but it cannot vanish, it should be non-zero. Mu is a function of u and v, that does not vanish, that does not vanish. Okay, now let's evaluate this Jacobian del phi f by del u v जो है वो बराबर होगा this del phi by del u del phi by del v del f by del v del f by del u del f by del v, जो कि बराबर होगा, अगर मैं it is phi sub u तो it should be p by lambda जो ना ओरिजिनली हमारा था, and this is q by lambda, I think minus q by lambda होना चाहिए कि minus p by lambda, एक तो माइनस होना चाहिए, नहीं ठीक है, p तो यही इसी के बराबर है, then this f sub u है तो it should be fp minus q divided by mu, और दूसरा जो इसकी होनी चाहिए तो it should be gp minus fq, ये है यहाँ पे divided by mu, ये डिटरमिनेंट, और हम दिखाना चाहते हैं ये नॉन जीरो, so that will be equal to 1 by lambda mu into p q fp minus eq, यहाँ पे gp minus fq, और इसको जब हम करेंगे that will be equal to 1 by lambda mu and into eq square, यहाँ कर देता हूँ twice fpq plus gp square. So we claim that eq square minus twice fpq plus gp square cannot be equal to 0. तो अगर ये 0 नहीं है तो ये जो जैकोबियन 0 नहीं है, जैकोबियन डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो वही हम तो बोले वो प्रूव करना आसान है, वो इस तरह से प्रूव होगा. Now since e du square को मैं ऐसे लिखता हूँ twice f du dv plus g dv square जो है is a positive, जो हम कर चुके हैं, definite quadratic form, उसका मतलब ये है कि कोई भी नंबर ले लो यहाँ पे, चलो ऐसे में, इसका मतलब ये है p q जो ही लेता हूँ multiplied by this matrix E G F F
into PQ cannot be equal to 0 unless P and Q are both 0. और अगर तुम मुझे यहाँ लिखना चाहिए, मुझे था ना कोई -q था कि -p था, -p ये कुछ, हाँ -q था. I think I should write यहाँ पे -q, थोड़ा सा यार. तो पॉजिटिव डेफिनेट क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब ये होता है, ये जो है नंबर है पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब स्पेशली कि -qp, मतलब ये जो ये वैल्यू आएगा ये भी 0 नहीं हो सकता unless both p and q is cannot be 0. now ठीक है ना, अब ये यहीं पे रख लो. एंड सिंस अगर तुम ये इवेलुएट करोगे इट विल बी एग्जैक्टली, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन जो है लेफ्ट हैंड साइड का which is exactly equal to this. So that is EQ square. अगर तुम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा, प्लस GP square cannot be equal to 0 unless P and Q is equal to 0 and 0. And since हमें पता है P and Q do not vanish together, ये हमें पहले से ही पता है, गिवन है. So therefore, therefore EQ square minus twice FPQ plus GP square cannot be equal to 0. तो hence जो जैकोबियन है इन दो फंक्शंस का वो 0 नहीं होगा. So therefore del F हमारा काम हो गया almost, del phi F divided by del UV is not equal to 0. thus अगर मैं अब ट्रांसफॉर्म करूं, thus U prime equal to phi of UV and V prime equal to F of UV is a proper parametric transformation of the surface, and it would send regular point to regular points and they are mutually orthogonal. So which transforms the same time? Which transforms a given family of curves, and their orthogonal trajectories into new parameters. Orthogonal trajectory जो मुझे prove करना था, into new parametric curves, into the family of parametric curves. यहाँ पे मैं इसको खत्म करूंगा, तो मैं लेकिन चाहूंगा तुम इसको फिर से देख लो इन चीजों को घर पे, और कल हम इंशाल्लाह, ये यूनिट सेकंड हमारा ऑलमोस्ट हो गया, कल हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, और अगर तुम्हें कोई डिफिकल्टी होगी कहीं पे तो उसको कल मतलब तुम लिख के रखना, नोट करके रखना, उसको देखेंगे. तो आज 36 प्रेजेंट थे. Let me stop it here.